ओके गाइस, सो आज हम समझने वाले हैं एजेंट हार्नेस के बारे में। एक नया टर्म है, बहुत ज़्यादा हाइप में भी है। इसको हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज एजेंट हार्नेस एंड क्यों आपको ज़रूरी है जानना। अगर आप एआई एजेंट्स बनाते हो या फिर आप एआई के फील्ड में समझना चाहते हो व्हाट न्यू थिंग्स आर कमिंग, देन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना व्हाट एग्जैक्टली इज एजेंट हार्नेस। So we are going to cover the basic theory of the agent harness and what is harness engineering, and then मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि एजेंट्स कैसे बिहेव करते हैं विद एंड विदाउट हार्नेस, राइट। सो उसको हम पहले समझेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे डेट हाउ एजेंट बिहेव्स, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द थ्योरेटिकल पार्ट कि एजेंट हार्नेस क्या होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली अ हार्नेस मीन, हार्नेस मीन्स लीश और समथिंग, राइट। जैसे अगर आप घोड़ा चलाते हैं तो घोड़े के पास आप एक हार्नेस होता है आपके पास। सिमिलरली अगर आप एक कुत्ता को वॉक करा रहे हैं, एक डॉग को वॉक करा रहे हैं, यू हैव अ हार्नेस। एंड व्हाई डू यू हैव अ हार्नेस? बिकॉज आप चाहते हो कि आपका कुत्ता कहीं भाग ना जाए, किसी को काट ना जाए, या फिर आपका घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना भागे, आप उसको कंट्रोल कर सको। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ हार्नेस डू इन एआई एजेंट, ठीक है। एआई एजेंट में भी हार्नेस यही काम करता है। सी, अगर आप एक एआई एजेंट बना रहे हो, व्हाट few years back how does the agent behaves, we have a LLM and हम उसमें एक prompt डालते हैं या अपने वेब यूआई से अगर आपने कोई लेट्स सपोज रैपर बनाया एंड बैकएंड से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। दैट्स अ स्ट्रेट अवे एजेंट, व्हाट अ एजेंट कैन डू। बट that is not the right way to do things anymore because now you have so many things coming in and आपको अपने एजेंट को प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा डेट व्हाट टू डू। देन उसके लिए यू माइट बी यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मे बी यू माइट बी यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। आप कोशिश करोगे अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालो, बट दैट सिस्टम प्रॉम्प्ट इज नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग, राइट। वो हर यूज केस को कवर नहीं कर पाएगा। सो एजेंट हार्नेस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और अ डिजाइन पैटर्न टू क्रिएट एआई एजेंट्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स whatever prompt you provide, your agent should be able to handle all kind of scenarios, चाहे वो फेलियर का सिनेरियो हो, सेफ्टी का सिनेरियो हो, फंक्शन कॉलिंग का सिनेरियो हो, टूल कॉलिंग का सिनेरियो हो, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। अब इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। एंटी ग्रेविटी इज़ अ हार्नेस, राइट। ये एक हार्नेस प्रोडक्ट है। एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स, राइट, एवरीथिंग वट एवर यू सी, आप यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट अगर डालते हो, यू हैव अ फंक्शन कॉलिंग, यू हैव अ टूल कॉलिंग, यू हैव एडिशनल कॉन्टेक्स्ट कॉलिंग, राइट। ये वही चीज़ करेगा जो आप इसको बताओगे एंड इट हैज़ अ फेल सेफ मैकेनिज्म, राइट। दैट मीन्स कि कुछ भी अगर फेलियर का सिनेरियो होता है, इट इज़ गोइंग टू हैंडल इट एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन दैट, नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसलिए हम हार्नेस इंजीनियरिंग करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसका हाइप बना दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये प्रैक्टिस डेली यूज होती है। इट जस्ट अ सेट ऑफ लॉजिक अराउंड योर एजेंट सो दैट योर एजेंट कैन कवर ऑल द यूज केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लेफ्ट सिनेरियो में देखोगे, जस्ट LLM, वी हैव अ यूजर, वो प्रॉम्प्ट टू LLM एंड इट गेट्स एन आंसर। अब यूजर हो सकता है कोई ऐसी चीज पूछ ले जो LLM के पास आंसर ना हो, स्पेसिफिक टू सम कंपनी। दैट्स वेयर योर एजेंट हार्नेस कम्स इन। यू कैन प्रोवाइड सम सेट ऑफ टूल्स, मे बी अ रैग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हम एक एजेंट के पास एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेट ऑफ पावर दे रहे हैं सो दैट योर LLM कैन handle all those kind of scenarios, right? So that's what your agent harness is. ये कोई न्यू थिंग नहीं है, जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराउंड AI एजेंट्स ओनली। सो कुछ इसेंशियल्स हैं इसके हार्नेस एजेंट बनाना है अगर आपको। सो व्हाट शुड यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव? You should have a context and a memory, right? What does this mean? Context and memory means कि whatever your agent is performing, it should store your data somewhere. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव नोटिस्ड, हम जब भी चैट जीपीटी से या हम लोग जेमिनाई एजेंटिक फ्रेमवर्क से बात करते हैं, दे हैव द कॉन्टेक्स्ट अराउंड इट, राइट। वट एवर वी आर टॉकिंग टू देम, इट हैज़ द कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट योर एजेंट हार्नेस शुड ऑल्सो हैव। अगर आपके पास कोई ऐसा एजेंट है विच इज स्टोरिंग योर मेमोरी समवेयर, दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड अ हार्नेस एजेंट, राइट। आपके एजेंट के पास एक कंट्रोल है, यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर एजेंट दैट what set of activities that agent can do. Then you should also have a tool orchestration, right? Now your agent can perform multiple things. आपका एजेंट ब्राउजर खोल सकता है, आपका एजेंट हो सकता है जीमेल से ईमेल भेज सकता है या फिर किसी अदर ईमेल प्रोवाइडर से मेल ट्रिगर कर सकता है। इट कैन कॉल अ MCP सर्वर। सो दो सेट ऑफ टूल फंक्शनैलिटीज योर एजेंट शुड हैव, राइट। सो जिसको हम टूल कॉलिंग भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टूल टू कॉल। So for example, if I am saying that draft a mail and send it at 10 p.m, so my agent should be able to first of all draft a mail and schedule a mail
at 10 PM. सो उसके पास एक्सेस होना चाहिए मेरे जीमेल का, मेरे कैलेंडर का, and then it can create a cron job or something that can schedule a mail at that particular time, right? So the third thing that your agent should also have a planning and workflow. What does this mean? That whatever action your agent is going to perform, it should be divided into steps or maybe goals, right? So इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, यू वांट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन and you can have multiple steps for that particular operation. Let's say you want to send an email, so you can have a set of steps that first of all do a research, check for the calendar, check for the validity of the email or something, and then finally send the emails, right? So you should have that kind of planning and workflow created for a particular requirement. So so whatever I'm telling you here is just a practice, ठीक है? ये practice है. अगर आप इसको यूज नहीं करोगे डजंट मीन योर एआई एजेंट विल नॉट वर्क. इट्स नॉट लाइक दैट. एजेंट कैन स्टिल वर्क. इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ बेटर एजेंट, राइट? जो फेलियर के केसेस होंगे वो कम होंगे. देन वी हैव वैलिडेशन एंड रिकवरी. व्हाट डज दिस मीन? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था. आई विल पिन इट समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स से यू हैव अ एजेंट जिसका काम ये है कि इट इज सपोज टू गो ऑन रेडिट and click on upvote, right? Maybe some post or something, it search a post and then click on upvote. So now let's say you created this agent. Now what will happen? आपने वो agent create करा, वो reddit पे गया, उसने upvote पे click करा, and उसके बाद उसके पास एक login screen आ गई, and वहाँ से agent return back हो गया. So technically agent ने अपना काम perform कर दिया because it has clicked on the upvote and it will give you a response कि मैंने अपना upvote दे दिया. बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ राइट थिंग, ठीक है? एग्जैक्टली उसने अपवोट नहीं करा, वी गॉट अ लॉग इन स्क्रीन देयर. सो दैट्स वेयर योर वैलिडेशन एंड रिकवरी कम्स इन. For example, your agent should be able to handle these kind of scenarios. What will happen if you click on this? Then you should have some kind of logic written कि वो validation हो हमारे पास. We validate it whether it is upvoted or not. So there should be some kind of mechanism to validate all these kind of things, right? Then we have the safety and guardrails, right? What is safety and guardrails? So basically your agent should not perform any destructive behavior or action, right? ऐसा कोई भी ऑपरेशन उसको परफॉर्म नहीं करना जो डिस्ट्रक्टिव हो. फॉर एग्जाम्पल यू आस्क योर एजेंट क्लीन अप माई टेबल, सो योर एजेंट शुड नॉट बिहेव और थिंक मे बी कि मुझे डिलीट करना है सब कुछ टेबल में से, राइट? यू शुड हैव सम काइंड ऑफ गार्ड रेल. गार्ड रेल का मतलब क्या होता है? यू आर stopping your agent to do something which is destructive. You check for the consequences and then your agent will decide whether to do that or not do that, right? So this is one of the important thing that you can have. And then we have observability and evaluation. So what does this mean? Your agent should always have traces, logs, events. Now what exactly this means मैं इसको आपको यहाँ पे show करता हूँ. So whatever you are calling, right, whatever you are performing, you should have some kind of trace or something. ये हमने already, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, this is exactly what we do in सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हम अपने सॉफ्टवेयर्स का, आप जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी ट्रेसिंग रखते हैं. वी हैव अ ट्राई कैच मैकेनिज्म, वी हैव अ रीट्राई मैकेनिज्म, वी हैव द मॉनिटरिंग लॉग्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू ओवर हियर. सो व्हाटएवर योर एजेंट इज परफॉर्मिंग, मेक श्योर you store it somewhere so that let's say your agent did something and you want to see what exactly happened, you should have some kind of trace or something, right? So that's what this means. यार log करो उस events को कि क्या action perform करा था, right? It helps you to evaluate your agent. It helps you to retrain the data as well. So this is something that you can have in your AI agents, right? And then there we have some external thing that is APIs database. So let's say you are calling some external APIs or something. So make sure your agent should log that data as well. You store that data in your database. ठीक है, आपका agent ने काम करा. You should have some kind of memory context or something. So SQL के अंदर वो सारे log and events को आप trace करो जो भी services call कर रहे हो. So these kind of information, this kind of computing if you are performing, then you are achieving a harness based agent. Your agent is harnessed and it cannot perform anything extra. Like जो भी आप perform करवाना चाह रहे हो, it is going to do that only with the additional context whatever you are providing inside the code, right? So बस basic सा यही चीज़ है. Without harness क्या होगा? It just going to call the external API, the LLM API and directly answer you. With harness क्या होगा? You
call the AI, you decide what to do. If the response is this, you have some kind of logic, and then you maybe call a tool or something. So basically safety, memory, guardrails, planning tools, all these kind of things, if you are including in your agent, then you are achieving a harness agent, or maybe harness engineering. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, आई शो यू एन एग्जांपल, एक डेमो करते हैं जहाँ पे आपको मैं एक रॉ एजेंट एंड एक हार्नेस प्रोटेक्टेड एजेंट दिखाऊंगा. सो ऑन द स्क्रीन दैट यू आर सीइंग, द रेड वन इज द रॉ एजेंट. यहाँ पे कोई हार्नेस नहीं है, राइट साइड में हार्नेस प्रोटेक्टेड एजेंट है, राइट. सो लॉजिक हमने क्या इंक्लूड करा है, raw agent is directly calling a API LLM, and we have a harness protected agent where we have some set of tools and everything, we have some guardrails or something, right. So let's do one thing. We have a scenario that current task is send a security greeting email to all active users. Note the SMTP server is highly unstable, frequently throw 429, rate limited 503, gateway errors. ठीक है, ये एक हमारा सिनेरियो है जो हम अपने एजेंट को बोल रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. So now let's do one thing. I'm going to click run this agent and see how both of the agents are going to behave. So we have on the left side, you see we have a raw agent. So it is also calling a tool, and let's see what will happen in case of failure, right. So we got an API error as we mentioned, and error आने के बाद the execution got failed, right. Let me zoom in here. एरर आने के बाद द एग्जीक्यूशन गॉट फेल्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द राइट साइड. हार्नेस एजेंट में क्या हो रहा है, हार्नेस एजेंट में वी हैव अ रीट्राई मैकेनिज्म, राइट. वी हैव द लॉजिक एडेड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फेलियर. So it will try something again, then it will go to the harness controller, retry to send the email or something, right. And then it will, complete the loop basically, right. Whatever, it is not going to end execution abruptly. So जो loop है हमारा वो complete होगा, and then the agent will do that, the task is completed. So that's what your harness engineering is. So इसने basically tool calling करी, send में end में email भी भेज दिया, regardless कि हमारी API fail हुई थी, but it tried multiple times, or we have a retry mechanism, or then it tried a different way, and then it finally got successful. So basically इसने आंसर आपको दिया at the end, right. So let me show you the code as well. So देखो कोड में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है exactly. Okay, so यहाँ पे हमारा execution हो रहा है. We have a raw agent and we have a harness agent. So अगर आप दोनों की definition देखोगे, you will see a difference in the way we are calling the agent, right. ठीक है, हम SQL को directly call कर रहे हैं, right. And in the case of failure we are not setting anything, right. कोई guardrail नहीं लगा रहे. Whereas in you see in case of the harnessed agent, हमारा mechanism थोड़ा सा अलग है, right. What we are doing, we are checking whether the agent completion is finished or not, right. हमारे पास एक separate method हमने create कर रखा है, check the task is finished or not, right. So all this engineering practice we are adding over here. ठीक है, हमारे पास अपनी अलग conditions हैं कि एक loop हमने लगा रखा है कि attempt कितने हो चुके हैं, attempt के बाद वो try करता रहेगा, then it will try to send an email as well. So this is what I was explaining, that we have to handle the logic within the code itself, right. We have divided everything in the steps, कि step हम call करेंगे, कौन सा tool कब call होना है, and this is one of the example. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका agent ऐसे ही behave करे. This is one of the example of a harness agent, but the concept is your agent should be able to handle the scenarios, all kind of scenarios maybe. ठीक है, तो जितने ज़्यादा अच्छे वो scenarios को कवर करेगा, उतना ज़्यादा strong वो agent होगा. So yeah, that's all for today's video, and I hope you found this video useful. आपके doubts clear हुए होंगे harness agent के बारे में, and you are going to create better agents from now onwards. So let me know in the comment section अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं. And if you found the video helpful, and if you want to support me, just like and subscribe this channel, and I'll see you in the next video. Peace.